रेज्यूमे या सीवी है क्या? ये दोनों बेसिकली फॉर्मल डॉक्यूमेंट हैं जो नौकरी तलाश करना चाहता है वो खुद बनाता है, जिसमें वो अपनी क्वालिफिकेशंस, अपने एक्सपीरियंसेस और जिस जॉब के लिए अप्लाई कर रहा है उसको मेंशन करता है। आइए देखते हैं रेज्यूमे और सीवी में जो थोड़ा बहुत फर्क है वो क्या है। रेज्यूमे बेसिकली छोटी होती है, इट इज अबाउट 1 to 2 पेजेस, इससे ज्यादा नहीं होती, जबकि सीवी लंबी होती है, उसकी कोई लिमिट नहीं होती। उसको बेसिकली हम कोर्स ऑफ लाइफ कहते हैं, यानी कि हमारी लाइफ में थ्रू आउट हम जो जो सीखते आए हैं प्रोफेशनली वो लिखते हैं। रेज्यूमे का बेसिक फोकस होता है स्किल्स और वर्क एक्सपीरियंस पे, जबकि सीवी में हम पूरे एकेडमिक करियर को डिटेल से मेंशन करते हैं। रेज्यूमे आजकल ज़्यादा यूज़ होता है और वो बेसिकली जॉब सर्च के लिए यूज़ होता है, जबकि सीवी एकेडमिक पर्पसेस के लिए यूज़ किया जाता है। ऑलराइट, चलिए देखते हैं कि हम जल्दी से गूगल डॉक्स से अपनी सीवी कैसे बना सकते हैं। मैं देखती हूँ कि बहुत सारे लोग एक दूसरे को हायर कर रहे होते हैं सीवी बनाने के लिए, विच इज़ नॉट बैड थिंग, लेकिन जो चीज़ आप खुद कर सकते हैं उसको खुद बेहतर तरीके से खुद कीजिए। सो वेरी सिंपल थिंग है कि आपको सिर्फ अपने ब्राउज़र पे जाना है एंड यू हैव टू टाइप इन गूगल डॉक्स टेम्पलेट्स। मैंने ऑलरेडी टाइप करके रखा हुआ है। जब आप उसको टाइपिंग करेंगे तो आपके पास ये विंडो ओपन हो जाएगी। You have to scroll down और यहाँ पे देखिएगा Google Docs template, इसको आप क्लिक कर दीजिए। This is a wonderful place। यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पे बहुत सारे आपको resumes, letters, brochures, जब हम नीचे जाते जाएंगे you'll find some more resume samples, you'll find more letters। This is just a wonderful place to go। जो भी रेज्यूमे सैंपल आपको अपने रेज्यूमे के लिए चाहिए आप उसको क्लिक कीजिए। जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट रेज्यूमे सैंपल एंड वोंट यू बिलीव अपनी रेज्यूमे बनाना इतना ही आसान है जैसे कि दिख रहा है। यहाँ पे आप अपने ये बिल्कुल एडिट हो सकता है पूरा। यहाँ पे आप अपने नाम को टाइप कर दीजिए व्हाटएवर योर नेम इज, एंड यहाँ पे जिस जॉब पे आप करंटली या आपका जो वर्क एक्सपीरियंस है जिस जॉब पे काम करने का वो लिख दीजिए, ठीक है। एंड यहाँ पे आप अपना एड्रेस और सब कुछ लिख सकते हैं, अपना एक्सपीरियंस, अपने स्किल्स, each and everything, each and every word in this format or document can be edited. Isn't it so simple? Extremely simple to have your own CV. You don't have to go to anywhere to ask or to get for a CV. आपको सिर्फ Google Docs पे जाना है and you have to go and you'll find like so many free samples for the resumes and for so many other things also। आप सिर्फ देख लीजिए कि आपको अपना resume किस फॉर्मेट पे रखना है। Alright, अगर आपको Google Docs से resume समझ नहीं आ रही तो there are some other ways कि आप अपनी resume को free भी build कर सकते हैं। and by the end of this video we'll see कि अगर आपको कोई बहुत ही समझ नहीं आ रही है and you're not satisfied with the free template तो फिर आप paid websites भी हैं जहाँ से आप अपनी resume खुद build कर सकते हैं। So let's move on to the first free resume builder, Google Docs के अलावा। तो Google Docs is one of the best and simplest way to use, simplest and easiest method to use। आप Google पे जाइए and write resume builder free। Once you type in there, you have to be careful in selecting the options। जैसे कि यहाँ पे जो first option हम देख रहे हैं that is not free, it is paid। हम इसको check करेंगे by the end of this video। ये देखिए जब हम नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे यहाँ पे कुछ कह रहे हैं कि there are some free websites that provide you the templates for the resume। इनको अपनी लिंक्स में खोल लेते हैं, चेक करते हैं how they are। Okay, this is the first website that I have clicked on जो कि आपको free resume templates provide करती है।
आप इसको स्क्रॉल डाउन करके देख सकते हैं कि इन्होंने कौन से टेम्पलेट्स आपको प्रोवाइड किए हुए हैं. देन यू कैन सेलेक्ट द टेम्पलेट. जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मुझे ये टेम्पलेट समझ में आया है. अच्छा, यू हैव टू बी केयरफुल इन चूजिंग द टेम्पलेट. आप देख रहे होंगे नीचे PDF एंड डॉक्यूमेंट लिखा हुआ भी है. सो आई वुड रिकमेंड कि आप ऐसा टेम्पलेट चूज कीजिए जिस पे डॉक्स लिखा हुआ हो, बिकॉज उसमें आप एडिटिंग आसानी से कर सकते हैं. You just have to fill in some of the information here. You have to choose your email address also over here. Alright, and फिर वो आपको ले चलेगा आपके टेम्पलेट के ऊपर. Now it's so simple to fill in this template. आप लेफ्ट साइड पे देखेंगे, there you'll find जो डिटेल्स आपको जाननी है, जैसे कि आप किस जॉब के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं. राइट ओवर देयर कि यू आर अप्लाइंग फॉर लेट्स से अ टीचर, एंड आप अपनी CV, आप अपनी पिक्चर अपलोड करना चाहते हैं, आप वो अपलोड कर सकते हैं. अच्छा, जब आप प्रोफेशन लिखते हैं तो उसमें भी आपको प्रोफेशन की ब्रांचेस दे देगा. यू जस्ट हैव टू फिल दिस. आप ये देखिए जो नाम हमने उस वक्त टाइप किया था इन ऑर्डर टू रीच ओवर हियर. आप लाइक यू हैव टू फिल इन ऑल द डिटेल्स जो कि यहाँ पे आपसे मांगी है. ठीक है, आप उन डिटेल्स को फिल करते जाएंगे, एंड ऑन द लेफ्ट साइड यू विल सी कि जो आपका डॉक्यूमेंट है वो खुद ब खुद बिल्डअप होता जाएगा. So this is one of the very great tool. You're one of the very great website जिसमें आप अपनी बेहतरीन CVs without any other help or any external help आप बना सकते हैं. इसमें एक और बहुत अच्छी बात ये है कि इसमें आपको कुछ skills भी दी गई हैं, but I would recommend do not use these skills. आपकी skills आपकी resume को और आपकी personality को reflect करते हैं. So don't go for any fake skills, and don't go for any skills that does not match your job or something like that. आपको अपनी skills choose करने के लिए इस पूरी वीडियो के फर्स्ट या सेकंड हाफ में देखना होगा, जहाँ पे हमने डिटेल से बात की कि आप skills को कैसे यूज कर सकते हैं. So this is one of the website, फ्री वेबसाइट जहाँ पे आप आसानी से अपनी रेज्यूमे को बिल्ड कर सकते हैं. ऑलराइट, हमने 2 टैब्स खोल रखे थे. लेट्स मूव ऑन टू द अदर टैब. ये देखिए, ये भी फ्री प्लेटफॉर्म है जहाँ पे अपनी रेज्यूमे को बिल्ड कर सकते हैं. वो थोड़ी सी आपको ओवरव्यू दे रहा है कि व्हाट काइंड ऑफ टेम्पलेट्स दे प्रोवाइड फॉर फ्री. ठीक, एंड यू जस्ट हैव टू क्लिक ऑन द ऑप्शंस एंड यू जस्ट हैव टू गो इन अ फ्लो. कंटिन्यू करते रहें. ये देखिए, यहाँ पे आपको इतनी सारी टेम्पलेट्स मिल गई हैं. Just choose on the template which you find best. हम ऑलरेडी वीडियो के सेकंड हाफ में बात कर चुके हैं कि कौन सी रेज्यूमे बहुत इफेक्टिव होती है. यहाँ पे तो बहरहाल लाइक द फर्स्ट रेज्यूमेज आर really effective and nice to see. जो फोर्थ रेज्यूमे है, it's not very professional, लेकिन you just have to choose the format that you like. और इस फॉर्मेट को आप चूज करके आराम, ये देखिए आप इसके बॉटम पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो रेज्यूमे है ये वर्ड में भी आप खोल सकते हो और PDF में भी खोल सकते हैं. सो गो फॉर सेलेक्ट फॉर टेम्पलेट जो कि आप वर्ड में खोल सकते हैं. यू कैन इजीली एडिट ऑन दैट टेम्पलेट. सो देयर वी गो. इट्स एज सिंपल एज दैट. अगर आप किसी भी फ्री रेज्यूमे टेम्पलेट से आप सेटिस्फाइड नहीं हैं, विच इज़ वेरी सरप्राइजिंग टू मी. आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं फ्री रेज्यूमे टेम्पलेट बिल्ड करने के लिए, और हमने पीछे कुछ वेबसाइट्स भी देखी हैं ऐसी जो कि आपको स्टेप बाय स्टेप रेज्यूमे बिल्ड करने को देंगी. लेकिन स्टिल इफ यू नॉट सेटिस्फाइड, यू हैव मेनी अदर वेज. यहाँ पे ऑन गूगल यू विल फाइंड सो मेनी वेबसाइट्स जो कि आपको चार्ज करके आपकी रेज्यूमे बिल्ड करके दे देंगी. So let's move on. Let's try one. अगर आपको वो try करना है तो let's try that. Again, you just have to go to Google, write down resume builder, और यहाँ पे जो first one है वो मैंने मेरे client ने try किया था. So let's move on to that one. Perfect resume builder. इसको आप अलग link में खोल लीजिए. Let's see how it works.
As per the best of my information, my client had to pay $11 जो कि पाकिस्तान के बनते हैं approximately 1800 rupees in order to get a series. आप देख लीजिए अगर आपको लगता है कि 1800 rupees में it's going to worth it to you, go ahead. अच्छा, it is again very ये जो भी paid templates है ना, ये बहुत simple होती है. They are very simple. आपको देखिए वो आपको पहले बता रहे हैं कि कौन से 3 स्टेप्स हैं जिसमें आपकी सीवी बन जाएगी. इसमें आप आसानी से कलर स्कीम खुद चूज़ कर सकते हैं. आप अपना नाम चूज़ कीजिए, सरनेम चूज़ कीजिए. ये देखिए, यू विल गेट टू हैव अ कलर स्कीम. आपको जो जैसा कलर स्कीम चाहिए आप वैसा चूज़ कर दीजिए. और एक अच्छी बात इसमें यह है कि वो आपको बता रहा है कि किस किस्म की सीरीज के सैम्पल हैं. दिस इज द स्मार्ट वन, दिस इज द स्ट्रॉन्ग वन. फिर नीचे हमने देखा कुछ शार्प्स भी हैं, कुछ ट्रेंडी भी हैं. इफ यू हैव टू गो बाय एनी purchased option, so I would recommend go by the smart one or the strong one. Okay, smart one is very popular these days, and at one glance it gave an employer or a recruiter an idea about all the skills and experiences about a person, अगर वो skills और प्रोफेशनल समरी जो है वो अच्छे से लिस्ट की गई है. एंड इन ऑर्डर टू सी कि कैसे लिस्ट करनी है आपने वीडियो के स्टार्ट में देख ही लिया है. सो आप चूज़ करके टेम्पलेट चूज़ करके कलर स्कीम चेंज करके you can have your very own CV. But please remember, देखिए मैं आपको बता रहा है कि इस किस्म की CV आपको बन के देगी. And you just have to keep filling your information here. ठीक है, आप नेक्स्ट करते जाएंगे तो वो आपको नेक्स्ट सेक्शंस पे लेके जाता जाएगा. एंड इन द एंड वो आपको जब बिल्कुल आपकी CV रेडी हो जाएगी, जब बिल्कुल आप लास्ट कॉलम अपना फिल कर देंगे, तो वो आपसे कहेगा कि आप पे कर दीजिए. आपको पेमेंट ऑप्शंस में पेपैल मिलेगा या आपको आपका पेमेंट बाय क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड मिलेगा. एंड वंस आप पे करेंगे तो वो फिर आपको ऑप्शन देगा. लेकिन वन थिंग मैं आपको बता दूं कि जो आपको ऑप्शन देगा डाउनलोड करने की, वो आपको PDF में देगा, तो आप उसको फर्दर एडिट नहीं कर पाएंगे. राइट, सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल. अगर आप पेड ऑप्शन ले रहे हैं, यू हैव टू बी केयरफुल कि आप सही इंफॉर्मेशन और एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन डालिए, या जो इंफॉर्मेशन आप डालना चाहते हैं वो सही डालिए. एंड यू विल बी रेडी टू गो. थैंक यू सो मच.